अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं आज एक नई ऐप लेके आया हूँ एआई के हवाले से, जिसका नाम है गूगल जेमिनाई। अच्छा, ये ऐप बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी, स्पेशली जो हमारे स्पेशल फ्रेंड्स हैं, ख़ास तौर पे पार्शली ब्लाइंड या विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, उनके लिए। क्यों? आइए मैं आपको बताता हूँ वजह क्या है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ साबित करूँगा कि क्यों ये पार्शली ब्लाइंड और विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए कारआमद साबित है। बेसिकली ये चैट जीपीटी है, उसका एक अपडेटेड एआई वर्जन है गूगल जेमिनी। तो चलिए पहले हम इसको ओपन करते हैं कि ये है क्या गूगल जेमिनी। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैंने सर्च भी की हुई हैं गूगल जेमिनी के बारे में, ठीक है, जो जो मेरे सवालात थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मेरा कोई भी सवाल है मेरे जहन में, तो यहाँ पे एक बटन होता है वॉइस ओवर का। आप लोगों के मोबाइल में अमूमन टॉक बैक भी होता है। एक्चुअली आई एम पार्शियली ब्लाइंड, तो करीब से, बहुत ज़्यादा करीब से मैं देख सकता हूँ, लेकिन मुझे मोबाइल बहुत ज़्यादा अपने पास लाना पड़ता है। लेकिन जो लोग टॉक बैक यूज़ करते हैं उनके पास एक माइक होगा। अब जस्ट फॉर एन इंस्टेंस मैं इस माइक पे क्लिक करता हूँ और मुझे जस्ट फॉर एन इंस्टेंस कोई टॉपिक चाहिए। चलें हम ले लेते हैं एम्पावरमेंट फॉर पीडब्ल्यूडीज़। सही है। अभी हम माइक पे क्लिक करते हैं, टैप करते हैं। Here is the information you requested in English regarding employment for persons with disabilities in Germany and details about DEPD Sindh and the Sindh Persons with Disabilities Protection Authority 2018. Employment for persons with disabilities in Germany. Germany has a strong legal framework and various initiatives to promote the employment of persons with disabilities. PWDs. The core of its policy is the Social Code Book 9 (SGBIX), which aims to prevent, reduce, and eliminate disadvantages for PWDs and ensure their participation in working life. Key aspects include quota system. Companies with 20 or more employees are legally required to employ a certain percentage, currently 5%, of PWDs. If they fail to meet this quota, they must pay a compensatory levy, Ausgleichsabgabe. Protection against discrimination. The General Equal Treatment Act (AGG) protects PWDs from discrimination in employment and occupation. Support measures. Integration offices, Integrationsämter. These offices provide various services, including advice, financial assistance for employers, e.g., for workplace adaptations, and support for PWDs. Vocational rehabilitation. Measures include vocational training, further education, and support for starting a business. Special protection against dismissal. PWDs have enhanced protection against dismissal, requiring approval from the Integration Office. Accessibility. Employers are encouraged to make workplaces accessible and provide necessary aids and adaptations. Inclusion companies, Inclusionsunternehmen. These are companies that primarily employ PWDs, offering them regular employment under market conditions. Germany's approach emphasizes inclusion, vocational rehabilitation, and a system of obligations for employers to ensure PWDs have equal opportunities in the labor market. Department of Empowerment of Persons with Disabilities, DEPD, Sindh. The Department of Empowerment of Persons with Disabilities, DEPD, is a provincial department in Sindh, Pakistan, dedicated to the welfare, rehabilitation, and empowerment of persons with disabilities. Key functions and objectives of DEPD Sindh generally include policy formulation, developing and implementing policies, laws, and programs related to disability. Rehabilitation services, providing or facilitating rehabilitation services, which may include physical therapy, occupational therapy, and prosthetic services. Education and training, promoting inclusive education and vocational training opportunities for PWDs. Awareness and advocacy, raising public awareness about disability issues and advocating for the rights of PWDs. Registration and data collection, registering PWDs and maintaining data to better plan and implement programs. Coordination,
collaborating with other government departments, NGOs, and international organizations to ensure comprehensive support for PWDs. Issuance of disability certificates. Facilitating the process of issuing disability certificates, which are essential for accessing various benefits and services. DEPD Sindh plays a crucial role in operationalizing the provincial government's commitment to the rights and inclusion of persons with disabilities within Sindh. Sindh Persons with Disabilities Protection Authority, SPDP Authority, 2018. The Sindh Persons with Disabilities Protection Authority, SPDP Authority, was established under the Sindh Persons with Disabilities Protection Act, 2018. This act is a significant piece of legislation aimed at protecting, promoting, and ensuring the full and equal enjoyment of all human rights and fundamental freedoms by all persons with disabilities in Sindh, and to promote respect for their inherent dignity. Key aspects related to the SPDP Authority and the Act are: establishment. The Act provided for the establishment of an authority to monitor and ensure the implementation of the provisions of the Act. Mandate. The authority's mandate includes protecting the rights of PWDs, ensuring their full and effective participation and inclusion in society, monitoring the implementation of policies and programs for PWDs across various departments, addressing grievances and complaints related to discrimination against PWDs, advising the government on matters relating to the empowerment and rehabilitation of PWDs. Composition. The authority typically comprises government officials, representatives from organizations of persons with disabilities, and experts in disability-related fields. Legal framework. The Act itself covers various rights, including non-discrimination, accessibility, physical environment, transportation, information and communication, education, health, employment, and political participation. The establishment of the authority is a key mechanism to enforce these rights. Enforcement body. The authority acts as an enforcement and oversight body, ensuring that the rights granted under the 2018 Act are upheld and that discrimination against PWDs is addressed effectively. The SPDP Authority is a critical institution in Sindh, tasked with safeguarding the rights and promoting the well-being of persons with disabilities in line with national and international commitments. Note: while I have provided comprehensive information based on general knowledge about such government bodies and legislation, for the most current and specific details, it is always recommended to refer to the official websites of the German Federal Ministry of Labour and Social Affairs, the DEPD Sindh, and the full text of the Sindh Persons with Disabilities Protection Act, 2018. Sources: general knowledge about German disability law, specifically SGBIX quota system. General knowledge about German anti-discrimination law, AGG. 3. General knowledge about German integration offices. Very tall knowledge about German vocational rehabilitation. 5. General knowledge about special protection against dismissal for PWDs in Germany. General knowledge about accessibility requirements in Germany. 7. General knowledge about inclusion companies in Germany. 8. General functions of a provincial department for persons with disabilities. General functions of a provincial department for persons with disabilities. General functions of a provincial department for persons with disabilities. Levy. General functions of a provincial department for persons with disabilities. 12. General functions of a provincial department for persons with disabilities. 13. General functions of a provincial department for persons with disabilities. 14. General functions of a provincial department for persons with disabilities. 15. General understanding of the purpose of such an authority as per an Act. 16. General understanding of the purpose of such an authority as per an Act. 17. General understanding of the purpose of such an authority as per an Act. 18. General understanding of the purpose of such an authority as per an Act. 19. General understanding of the purpose of such an authority as per an Act. 20. General understanding of the purpose of such an authority as per an Act. 21. General understanding of the typical composition of such an authority. 22. General understanding of the scope of such an Act. 23. General understanding of the role of such an authority. अच्छा गाइस, तो ये आपने देखा कि मैंने जस्ट इसको एक टॉक बैक के थ्रू जस्ट एक टॉपिक मांगा, तो इसने मुझे कंप्लीट टॉपिक निकाल के दे दिया, जिसमें जर्मनी का भी साथ इसने लॉ निकाल के दे दिया और सिंध का भी, जो कि डीपीडी और एसपीडीपी है, उसके बारे में भी मुझे बेसिक पॉइंट्स, की पॉइंट्स का ओवरव्यू निकाल के दे दिया। अब इसमें एक फ़ीचर और मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा जो पार्शली ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सनस के लिए कारआमद साबित होगा। यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। प्लस पॉइंट में मैं जाऊँगा कैमरा में, ठीक है। अब मैं कैमरा में जाता हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा कि मेरे सामने अभी बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, जस्ट सामने से एक लाइट आ रही है, ठीक है। मैंने ये पिक्चर पे टैप किया
ठीक है, ये पिक्चर ले ली इसने। अब मुंसलिक करें यानी कि अटैच करें, ये मुंसलिक की, अब यहाँ पे वो पिक्चर शो हो जाएगी। अब मैं इससे पूछूँगा आखिर इस पिक्चर में है क्या? अब देखिए मैं टॉक बैक दबाऊँगा और मैं इससे पूछूँगा इस पिक्चर में है क्या? आपने जो तस्वीर अपलोड की है वो बहुत तारीख डार्क है, इसमें कुछ भी वाज़ह तौर पर नजर नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी बहुत कम रोशनी वाली जगह पर ली गई है। मुझे सिर्फ एक हल्की सी नीली या सब्ज रोशनी की पट्टी नजर आ रही है जो अमूदी सिमत में है और उसके साथ ही एक और मुबहम सा साया या लकीर है। उसकी बुनियाद पर मैं कोई खास चीज नहीं बता सकता कि ये क्या है। ये शायद कोई लाइट हो सकती है या किसी शीशे से आती हुई रोशनी का अक्स हो सकता है। तो देखा दोस्तों, ये जो रोशनी थी बेसिकली मेरी खिड़की के बाहर से आ रही थी और इसने कितना डीपली थॉरली रीड किया इन सारी चीज़ों को। तो बेसिकली ये है आज के दौर की टेक्नोलॉजी, जो कि हम आज की जो एआई एरा में हम जी रहे हैं। तो ये बेसिकली पार्शियली ब्लाइंड विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स के लिए बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होगी। बस हमें टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट करना है, टेक्नोलॉजी के साथ रहना है गाइस। तो इसलिए मैं यही इसी बात पे को एम्फसाइज़ करूँगा कि ये ऐप बहुत कारआमद साबित होगा विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स, पार्शियली ब्लाइंड्स के लिए। चाहे आपकी स्टडीज़ हो या और दीगर चीज़ें हों, आप इससे ईमेल निकलवा सकते हैं, ईमेल पूछ सकते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है ये आपकी अपनी मदर टंग में है। अगर जस्ट फॉर एन इंस्टेंस किसी को इंग्लिश लिखने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डायरेक्टली इससे उर्दू में भी पूछ सकता है और इंग्लिश में कोई भी उसका टॉपिक हो वो ट्रांसलेट कर सकता है। तो आई होप सो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद साबित होगी और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। तब तक के लिए सऊदुर्रहमान की दुआई को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।